Let's start today's session. If anyone has general question, you may ask. Otherwise, we can move to our today practice session. मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम मैं जब स्पीकिंग स्टार्ट करती हूँ तो मतलब माइंड स्टक सा हो जाता है, ना ही वर्ड्स आते हैं जहन में ना ही आइडियाज। तो मैं अपनी प्रैक्टिस को किस वे से लेके चलूँ, ये थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। Okay, I have a question before answering your question. If I ask, let's say I am asking the first question which is here, and you are studying, you are lacking ideas, right? यस And मैम। if let's say if I ask the same question in your native language, would you stuck there or not? मे बी नॉट मैम। मैम एक्चुअली आइडियाज को इलेबोरेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अगर आइडियाज आ भी जाएं तो। Alright, so it's mean if you are able to convey your answer in your native language, it's mean you have an ideas. Ideas are not problem. You have a problem of conveying your message. You have a problem of conveying your message in another language, right? यस मैम। Yes. This is your first problem. And second problem, you have mentioned that you face problem to extend your answers, right? So यस okay, this is mentioned like we need to develop our answers while answering, like specifically in part 3. But this comes later. First, you need to make yourself comfortable for delivering ideas. So what you need to do for this, idea development comes later when you are able to, like let's say we are giving a speech and we're saying that we are conveying our message. If we are unable to say anything in a language, it's mean how we are not thinking about grammatical mistake or anything, because when we are unable to convey means it's mean there is no concern to check the grammatical mistake or anything, because first we need to convey the message, and when we are able to convey our message, then we need to check either our speech is clear or not, like it is understandable. And if it is understandable, then we look into that either we are speaking accurately or not. So these steps come later. Same, if you are able to convey your message, then you need to think about, should I develop my answer more? First thing you need to do, if you are lacking ideas, try to uh, if they are develop or not coherent, try to keep speaking. Just don't stuck there. Don't just stop while giving one answer. Even if you are taking little bit pauses, still speak, keep speaking. This is the one strategy which help when you have an ideas problem. Okay, so try to you don't have an ideas of I think lacking, because you are able to answer the same question in your native language. It's mean you have an ideas, you have the problem to convey, like you are thinking in the mind but you are have a problem to convey in another language. So um, try to make habit in your routine. Try to think many things in your English language instead of Urdu language. Try to talk anyone with this language. It will help you to convey your message. Like if people thinks of what is in the lunch, try to ask these things. If someone is knocking at the door, try to think what you would like to answer. This is one way. Okay, sometimes it is good. We have a variety of ideas when you make yourself comfortable or familiarized with different topics. Like if you will practice like for a month, then you will notice that you have a lot of ideas and you are able to convey. So if you record the first day speech and if you record the same speech at the end of the month, you will notice that there are a lot of improvements. In the initial, we face some issues like ideas conveying. So you just need to keep speaking even if you are lacking ideas. So this is the one strategy will help you. If you know nothing, if you are stuck and take little bit pauses, then think, then start speaking again. So try to speak on any topic even in your free time.
try to think about what is in, like if you are sitting in a room, try to think about what is in the room, what are the things, like there is four one room, four bed, one sofa, and you can say that one fan is when a clock is hanging on the wall, there are curtains. Try to make yourself. One thing I observe, and based on my experience, I could say the more you become descriptive, it will help you to speak at length, because we need to become descriptive. Like there are curtains, and try to make it more descriptive, like what are in colors, what is the size of those curtains, from where you bought it. So the more you become descriptive, the more you have an ideas. This is another way. And apart from that, I have also shared one app link, and you can find in the channel pin list. And in this list there is a variety of topics you can explore, different topics. Purpose of sharing that link, one is that it helps you to record the entire test, and you can listen back to it if you have any issue like filler words, like if you are um, speaking clearly. So these are things. Apart from that, this app has multiple topics regarding part 1, 2, and 3, and you can explore any topic where you lack ideas. Sometimes we lack ideas in certain topics because we are not used to read or think, or and we don't know anything about that. So you can explore those ideas as well, but don't try to memorize the answer of each person. You just can spend 10 to 15 minutes to read the answers, what they are written, what they're talking about. But I have noticed even band 9 students are describing their ideas are not creative. They're just like, if do you like the food, do you like drinks, you can just say yes, I like the drinks because it is one which is most preferred in the summer season when people are feeling thirsty. So you can talk about why even we serve this drink in to guests. It is very common. So these are the different ideas. These are the basic things we know. So I hope so these will help, but don't memorize. Don't try to memorize the answers of this app, because examiner are trained to spot the memorized answer. You can explore variety of topic, and when you will speak on variety of topics, you will also have different ideas. And try to listen other people when they are giving answering. So try to note how they are answering the things, the same question in the session. It will help you to get the ideas in different ways. Apart from that, try to make habit of listening different podcasts, and even you can say that it will help us, because listening podcasts is important, because for speaking is our output, and we need input, and whatever we are listening, it is an input. So try to make your feed and everything in English. So try to listen everything in the English before the exam. It will be also helpful. You will not only listen how the words are pronounced, but you will also get the ideas and new words. I noticed that learning new vocabs through podcasts is more faster than reading. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम क्या हाल सलाम आप सर। लोगों को? एक मिनट होल्ड करें, आप कंटिन्यू करें आप लोग। Sure, sir. I hope so, ma'am. You get the answer. If you still have question, or anyone have question, you may ask. Sir Zafar, join us. Sir Zafar is the founder of I Could Go, and sir, thank you for joining us today. In the meantime, sir is on hold. Anyone have question, you can ask. Okay, if no one has question, then we can move to our practice session. If anyone is new to this session, you can ask the question. If you don't know anything about this test, I can summarize the main points. Otherwise, we can move to our practice session. Okay, if no one has question, who would like to answer the part 1 question first? Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, sir. Okay, ma'am, I do have a question. Actually, I give mock test to a lot of people, and I have like given a mock test a lot of time. The only feedback I get from those judges and the other guy who is actually taking my mock test is who gives me improve your grammar.
Actually, my fluency is really good, and I don't hesitate when I'm speaking English. But this suggests me every time improve your grammar. Everything is okay. Just improve your grammar, and you will hit 7 and 7.5. So, how I can improve my grammar when I'm speaking? Can you please give me any tip? Okay, briefly, we haven't discussed this part yet because this is the next Monday topic. We will discuss how we can bring grammatical structure. One thing is that many people say that, do you think that your grammar is accurate while speaking? Like your answer don't have issue any subject verb agreement mistake, subject like present past mistake. Actually, I have noticed sometime I make grammar mistake whenever I am talking about the past, and when I have to shift toward the present situation, and then during this shift, sometimes I make mistakes. So there's a difference between uh, making your speech accurate and bringing a range of sentence structure. So these are the two different things in marking criteria. Accuracy means you are speaking your grammar accurately, means you are not making any present past mistake. You are using right subject verb agreement. If you know subject verb agreement, then it is okay. Subject is that she, you can't say she do not like her, she like reading, because she is a singular and we will use singular verb like with es. So this is a subject verb agreement mistake which we make sometime. So these are the basic thing we should be aware of it. Sometimes we use possession mistake, like we're talking about a girl and we're using his in specifically part 2 when someone asked to describe a person or any who know the most, who is your friend. So this is the some mistake which we can avoid. Sometimes we need to say remembered past verb and past form of verb, and we're saying remember just. So this is these are the some mistake. If you you need to first work grammatically accuracy, because it is one of the marking criteria. Grammatical range of structure, if I talk about, I will discuss in the Monday class upcoming, because in this week we're discussing about more focusing on bringing clarity in our speech, and topic of this week is pronunciation. Fluency and coherence was discussed before the Eid holidays. So these are the different things you can bring in your one thing when we talk about range of tense structure. So we don't need to worry about it, because a test is designed in such a way that examiner can ask you the range of question like present, past, perfect. So this is the thing which we don't need to worry. One is that when you read the band descriptors, you will notice that we need to bring complex sentence structure. Complex sentence structure doesn't mean you need to speak long sentences. It just means two simple sentences are joined with the conjunctive words like because and so. Try to link these things and like talk about facts, opinion, consequences. So in that way you can make your sentence structure complex. But if you think you are making mistake by using complex sentence, it is better to use simple tense without making any mistakes. Ma'am, can I add something here? Sure, sir. You're welcome to it. Okay, for the part of grammar, sir, you can watch 2 to 3 videos by the IELTS Advantage channel on YouTube, and download a one-pager grammatical rules from Google. Any one-pager grammatical rules, go through them, and don't focus on the topic of the sentence. For example, if you are narrating a sentence, don't focus that it is a past indefinite sentence or like that. Just focus on the narration and record yourself in a sound recorder in your mobile phone, and then listen to yourself. You will have a sound from your heart that there is some mistake. And you can also use speak to text methods available online. For example, extensions in Google Chrome, speech to text. Just do that and then give your generated text to ChatGPT and ask for grammatical mistakes. And once you go through the one pager, for example, you read about the past indefinite tense, read this tense and then practice that thing for 2 to 3 hours. Practice one thing for 2 to 3 hours and then another thing for 2 to 3 hours. And after that, once you have done 4 to 5 things, you will see improvement in your sentences. One more thing, for the part of correction, it is a good practice that you listen to yourself and find mistakes. But
you cannot improve once you analyze yourself. So find somebody who is better than you, slightly better than you in English. For example, iCode Guru is a nice platform. Here we all are learning together. So different students have different learning experiences and opinions. So you can share your sentences here, and we can suggest the improvements. Don't What the mistake people normally do, that they just try to correct themselves on their own. That's why there is no improvement in them. You are at the peak of your learning, so there is a law of diminishing returns. You cannot improve yourself. So for that, you have to get some review from Chat GPT, or some individual who is better than you in slightly better than you in English. And for the part of Chat GPT, that is AI generated text. But what we speak, that is humanized text. So Chat GPT is better for intense grammatical rules. But in spoken English, there is a lighter way of speaking. So it's better to communicate in this session and get review from Ma'am Arisha or other moderators or trainers, and instead of AI. If you want to go towards the intense grammatical structures, then you can use AI, which is used in written English. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for adding your insight. I hope so it will answer your question. If sir, Zafar, you are available, then you can take over. Otherwise, we can move to a session. Okay, if anyone else want to add something about sir question, you are welcome to add. Okay, ma'am, I have another question. Actually, I want to talk about fluency. Sometimes when I feel I am making any mistake, any grammatical mistake, I do correct myself at the same time. Does it will affect my fluency? Will the examiner deduct answer remarks like marks from the fluency factor if I correct myself during the speaking test? Okay, if we talk about the marking criteria, little bit corrections are okay. Even if you read the band 9 marking criteria, but it doesn't be occur excessively, like you are not making too frequently. So if they are somehow, then it is okay. When it is mentioned in band 9 marking criteria, sometimes it occurs. So make sure these are not frequent, like hesitation, self correction, and repetition. All these things are considered in the marking criteria of fluency and coherence. Okay, ma'am. Thank you. Sir, for fluency part, if you are hesitating while doing the practice, then if you are thinking once, and you will think of 10 to 15 times in your real test exam, because at that time you will be under stress. So for these grammatical rules, lexical resources, and these basic things, you have to do more and more practice, so that for these things you don't have to think, or you don't have to focus while speaking. These should be your natural things. To do that, what we do is that first we think in our mother tongue, which is Urdu or Punjabi or Saraiki, whatever, and then we translate into English, and then we speak. So what you can practice is that you can tell yourself to even dream in English. Once you are sleeping, you should dream in English. That should be the level of your English practice once you are attempting the IELTS or preparing for the IELTS. So, for the part of grammatical rules, once you are speaking in the real exam, you should not be thinking about if I am narrating the correct grammar or not. Grammar should not be your focus. Lexical resources should not be your focus. Vocabulary should not be your focus. Fluency should not be your focus. What should be your focus is to create new idea, and also you have to create idea, and then you already know how to extend that idea, how to use different time periods, past, present, future, and what are different sentences, what are filler sentences which you can add to extend your answer. So you don't have to think at that time for these robotic things which are already given or which are already narrated by past examiners.
Yes, sir. If it is a problem of fluency, then try to overcome it because you need to be a fluent. As I mentioned, when we're in exam, sometimes we're stressed and we make more syllabus. So we have discussed. If you go through the sheet, you can find out the session discussion on syllabus, and we have discussed some strategies because I found many participants were facing issues of syllabus. So that's why I discussed, and we have discussed some strategies even I have used myself and I have adopted and now I find myself fluent. Like I have overcome a lot of syllabus because there were many of them when I started speaking. So I hope so. These will also helpful. There are many of them. You can go through that article. Just strategies, second link. So you will when you will go through the sheet, you will find the lecture on discussion on syllabus and strategies to adopt, and even you can go through the article yourself, so you will find some strategies there. Okay, one thing, sometimes if there is a little bit syllabus sometime after the end of the sentence, it is okay, not too frequently, but if it is between the certain words, then you need to avoid it because and best way to spot your syllabus is to record your voice because when we are recording, you will be able to spot every single word you are speaking, and even if sometime when you are speaking real time, you are not even able to analyze that you are speaking too many filler words, but when you are recording the your voice, you will analyze there are a lot of filler words. So to become fluent, I think recording can help you. Sir, Naman Manib also join us, and if sir Naman you would like to add. अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे 1 मिनट दे दें। Sure sir, you can take it. सर Thank you for नमाज भी लेते हैं। joining us. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों ने देखा माशाल्लाह कि CS50X पजल का रिजल्ट बहुत अच्छा है और हम जो हमसे सेकंड नंबर पे पोजीशन है जिसकी, वो हमसे हाफ, हम उससे डबल से भी ज्यादा आगे हैं। तो सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, उसकी 128 टीम्स ने विन किया, हमारी 259 टीम्स ने विन किया। तो दिस इज ग्रेट रिजल्ट और इंशाल्लाह अगले साल हम इससे भी अच्छा करेंगे। तो थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू द मॉडरेटर, थैंक्स टू अलमाइटी। और आज हमारे 3 स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप लगे हैं अमेरिका में, तो उस पर भी थैंक्स अलॉट टू द सेल्फलेस मॉडरेटर्स के आप लोगों के वैसे इतने स्कॉलरशिप लग रहे हैं, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें किसी का 1 रुपया नहीं लगा। तो दैट्स आल्सो अ ग्रेट थिंग। तो जिनमें से क्या कहते हैं कि एक का CGPA 3.3 भी है, तो और एक आइल्स की स्पीकिंग में बैंड 5.5 भी है। तो अगर उन लोगों का लग सकता है तो ऑफ कोर्स आप लोगों का भी लग सकता है। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा आइल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी, ये यूएस में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के रिगार्डिंग। मैं ये पूछ सकता हूँ? जी पूछो। अब मैंने फॉल के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैंने फॉल के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरी कुछ है ना स्कॉलरशिप्स आ चुकी हैं। उसमें से जो कंसिडरेबल स्कॉलरशिप है मेरे लिए, जो अफोर्डेबल है फैमिली के लिए, वो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एलिबामा से आई है। उसमें जो टोटल खर्चा आ रहा है वो है ना पर ईयर आ रहा है अराउंड $19,000 का। तो आपसे एडवाइस अच्छा, लेनी थी कि अंडर ग्रेड का ये ये अंडर ग्रेड का पर ईयर पर ईयर है, ठीक है विद हाउसिंग एंड ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो अब आपसे एडवाइस ये लेनी थी कि अभी जाना चाहिए या मास्टर्स में जाना चाहिए, किस तरह इसको है ना देखना आपने, चाहिए। अगर आपने नोटिस किया हो तो पाकिस्तान से बहुत कम लोग हैं जो कि अंडर ग्रेड में अमेरिका आते हैं।
वो यूजुअली क्योंकि फीस मेरे ख्याल में काफी ज्यादा है अंडरग्रेड की हर नहीं, जगह। फीस ज्यादा नहीं होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अमेरिका की अपनी आबादी काफी ज्यादा है, तो ये मास्टर जी। में अमेरिका में 1 मिलियन से ज्यादा स्कॉलरशिप होता है। कितने हम्म। होते हैं? 1 मिलियन से ज्यादा। तो जो अमेरिका का अपने अंडर ग्रेजुएट करते हैं बच्चे, वो क्यों नहीं मास्टर करते? उनको जॉब लग जाती होगी। नहीं, वो खराब हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अमेरिका में जो अंडरग्रेड का सिस्टम है वो बहुत पथेटिक है, इंतहाई बुरा है। मास्टर इसलिए अच्छा है कि मास्टर के लिए पूरी दुनिया से टैलेंट लेके आते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट का पैथेटिक किस मामले में, मतलब एजुकेशन अच्छी नहीं है या पैथेटिक किस तरह है, वो थोड़ा सा डिफाइन पथेटिक इस करें। तरह, हाँ, पथेटिक इस तरह है कि 18 साल के बच्चे होते हैं जो पहली दफा जिंदगी में घर से बाहर निकलते हैं। हम्म। तो जो यहाँ पे लोग हैं, जिस तरह जो मेरे क्या कहते हैं कुलीग्स हैं, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अमेरिका में हर स्टूडेंट ड्रग करता है, बस जो गरीब है वो सस्ते वाली करता है, अमीर महंगे वाली करता है। अच्छा। सही है। तो बाकी दिस इज ओपन सेक्स सोसाइटी, ये भी आपको बात पता होगी। जी तो बिल्कुल। इसलिए और प्लस यहाँ पे मजहब पे भी लोग यकीन नहीं करते, तो उन्हें जिंदगी का मकसद ही समझ नहीं आ रहा होता। सही। तो सही। उस तो अंडरग्रेड में यहाँ पे सूरत हाल काफी खराब है। ये इसके अलावा और कोई रीजन एजुकेशन वगैरह के हिसाब से, तो पाकिस्तान से एजुकेशन के कंपैरिजन में। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास की अंडरग्रेड की। वही अच्छा। जितना मैंने बताया, आज हमारे 3 स्टूडेंट्स के अमेरिका में स्कॉलरशिप हुए हैं, और हमारा हम्म। कंपटीशन था अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ, यूरोपियन स्टूडेंट्स के साथ, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा। तो हमारे अगर 3 स्टूडेंट्स एक ही दिन में विन कर रहे हैं तो उसका मतलब पाकिस्तान का लेवल अच्छा है, बुरा तो नहीं। इन कंक्लूजन आपका कहना है कि वहाँ का माहौल वगैरह खराब है, इस वजह से वहाँ नहीं जाया जाए और पाकिस्तान में पढ़ा जाए हाँ क्योंकि। बिल्कुल, अगर 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 स्टैनफोर्ड में आप आ सकते हैं तो जरूर आ जाएं। स्टैनफोर्ड की फीस मेरा ख्याल है कोई 70-80 थाउजेंड डॉलर है साल की। बिल्कुल। तो वैसे इंस्टीट्यूट में आना चाहिए, लेकिन आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से बेशुमार लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं, वो सोचते नहीं आने का, क्योंकि उन्हें समझ है इस बात की। अच्छा। जब आप आएंगे तो आपको भी ये बात पता चल जाएगी। यानी कि अगर आप एक अंडर ग्रेड की क्लास में बैठे हैं और 50 में से जो 45 बच्चे हैं वो क्लास पढ़ने में सीरियस ही नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? अच्छा। तो सही। दैट्स द सिनेरियो। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो जॉब के लिए डीएसए वगैरह ही है ना, ज्यादा खुद से ही पढ़ता है ना बच्चा, या है ना यूनिवर्सिटी का वो नाम वगैरह मैटर करता है इसमें। ये खुद पढ़ना होता है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मैटर करता, सीजीपीए मैटर करता ओके। तो इसका मतलब पढ़ाई का स्टैंडर्ड कुछ भी हो, बच्चे को खुद ही पढ़ना है है। सीएस में। ऑफ कोर्स हर सही। फील्ड में खुद ही पढ़ना। तो इन कंक्लूजन आपका ये कहना है कि वहाँ के माहौल की वजह से बच्चा खराब हो जाता है तो ना जाया बिल्कुल, जाए। यानी कि जो हमारा पहला स्टूडेंट अमेरिका में जिसकी जॉब लगी ना $2.5 लाख की, जी। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का ग्रेजुएट है। वो स्कॉलरशिप लेके यहाँ पे आया था। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की। वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अच्छा। ठीक है, बाकी आप हमारे अगर वेब पेज पे जाएं तो वहाँ हम्म। पे एलुमनाई की टैब है, उसमें देख लें हमारे जितने स्टूडेंट अमेरिका फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके आ रहे हैं वो सारी पाकिस्तान की लो टीयर यूनिवर्सिटी से हैं। तो सही। पाकिस्तान का एजुकेशन का लेवल बुरा नहीं है। तो पाकिस्तान में फिर आप बता सकते हैं कहाँ जाया जाए, नस्ट जाया जाए या, क्योंकि मैं इसमें नस्ट सिर्फ मास्टर्स में बहुत जाते हैं। कोई भी नहीं जाता, कौन जाता है नर्स से? सुना है वहाँ रिसर्च वगैरह, मुझे मैंने बस सुनी सुनाई बातें, मैं इसीलिए हाँ आपसे एडवाइस लेना बिल्कुल, चाहता हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान से पहले लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे नहीं आते थे। हूँ। पहले लोग आते थे कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप पे, जकात बेस्ड स्कॉलरशिप पे, जिनका आपने भी नाम सुना होगा। सही सुना है बिल्कुल। किसी का किसका नाम, सॉरी। नाम? जकात वाले स्कॉलरशिप का नाम पता है आपको? ये मैं नहीं सुना पहले। अच्छा, आपको कौन से स्कॉलरशिप का पता है? मुझे अभी जैसे मेरे बड़े भाई अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स में, तो वो मास्टर्स और पीएचडी जिसमें रिसर्च करते हैं वो वाली स्कॉलरशिप्स का मुझे पता है।
कि उसमें पे मिल जाती है और स्कॉलरशिप होती है ट्यूशन पे? मसलन आपको फुल ब्राइट का पता है? जी, फुल ब्राइट का मुझे पता है। हाँ, ये ज़कात स्कॉलरशिप है। अच्छा। अच्छा, यू ग्रेड का पता है आपको? अंडर ग्रेड की हाँ, अंडर स्कॉलरशिप? ग्रेड की एक सेमेस्टर के लोग जाते थे, ये ज़कात स्कॉलरशिप है। अच्छा। तो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जो लोग आते, ये बेसिकली कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं गरीब कंट्रीज के लिए, सही। कि चलो यार तुम गरीब हो, तुम भी अपने थोड़े से बच्चे पढ़ने के लिए भेज दो। तो पाकिस्तानी पहले जाते थे इन स्कॉलरशिप्स पे। ओके। तो ओपन स्कॉलरशिप पे पहले पाकिस्तानी कभी नहीं थे आते, बहुत रेयर। तो अभी ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो अभी काफी सारी ये स्कॉलरशिप है, आपको भी मिल जाएगा। तो आप पाकिस्तान की उस यूनिवर्सिटी में जाएं जिसे आप, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, जो घर के पास है, उसमें चले जाएं। अच्छा। और क्योंकि अपना सीजीपी अपना अच्छा रखें। अच्छा, तो मैं इसका मतलब, क्योंकि नस्ल में मैं कराची का रेजिडेंट हूँ और नस्ल इस्लामाबाद में है, तो मैं ना जाया जाए, घर के करीब वाली में जाऊँ मैं किसी, हाँ बिल्कुल, घर जहाँ के करीब जीपी वाली में, अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, सही। घर के करीब वाली में जाएं और उसमें टॉप करें। ओके। नेशनल में तो कंपटीशन ज्यादा होगा ना, तो घर के करीब बिल्कुल। वाली में जाएं, पेरेंट्स का टाइम गुजारें। ओके। तो जब वो नहीं होंगे तो मिस करेंगे आप उनको। सही, बिल्कुल। और जो है ना, उसमें सीजीपी अच्छा हो। सीजीपी उसमें अच्छा लें ताकि मास्टर्स में फिर अप्लाई करें। हाँ बिल्कुल, ताकि मास्टर में स्कॉलरशिप मिल ओके। जाए। ओके, थैंक यू और सो एक मच बात आपकी याद एडवाइस। रखिएगा, हाँ एक बात याद रखिएगा, जी। जिंदगी में हमेशा नालायक बंदे पैसे लगा के पढ़ते हैं। ओके। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नालायक रहो और अपने पैसों से पढ़ लो, या आप अभी से अच्छे हो जाओ और स्कॉलरशिप पे पढ़ लो। सही। ये अपने आप को बता दो कि अपने मास्टर जो है वो अपने पैसों से नहीं करना, स्कॉलरशिप लेके करना। इसकी कितनी गारंटी होती है कि मास्टर्स में मिलेगी ही मिलेगी? 100%। 100% गारंटी होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अगर सही। आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, तो अगर आप अभी से रोजाना 1 घंटा हाईकोर्ट गुरु पे लगाते हैं, तो थर्ड ईयर के बाद आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे और वो हो जाएगा उसी टाइम पे। तो जब आपका 8 सेमेस्टर हो जाएगा तो आप अमेरिका चले जाएंगे। अच्छा। अमेरिका अभी में से 1 मिलियन से ज्यादा स्कॉलरशिप होता है, तो देर आर लॉट ऑफ चॉइसेस। तो अभी से तैयारी एज एन मेरी जीपीए ऊपर उसके अलावा कुछ? हाँ जी, मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, तो ये कोई प्लीज साथी चैट में शेयर कर दे, तो वो 4 टॉक्स सुन लें, तो उसमें बताएगा कि हर सेमेस्टर में क्या करना होता है। सही। तो बोरिंग टॉक्स हैं वो, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो दिस विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। ओके। नहीं, बिल्कुल मैं सुनूंगा। थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस के लिए। थैंक यू जी। किसी और साथी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे सर, मैंने अपना वैसे तो मैंने ज्वाइन काफ़ी देर पहले का किया था। उस वक्त मेरा ख्याल 2019-20 में स्टार्ट किया था, उसमें मैंने ज्वाइन किया हुआ था हाई कोर्ट गुरु को, लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर सका मैं। तो अभी मतलब मैं काम कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंजाब आईटी बोर्ड में। तो वहाँ पे तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पीकिंग इंग्लिश में भी। लैक ऑफ नॉलेज भी आप कह सकते हैं, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। तो मेन जिस लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें रीडिंग सॉरी राइटिंग और स्पीकिंग में मुझे बहुत डिफिकल्टी आती है। तो मैंने बहुत टाइम ट्राई किया बेहतर करने के लिए खुद को। मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश की, पर कोई एज ए रिजल्ट नहीं मुझे। तो उसी के मतलब कोई मुझे एक रोड मैप दें ताकि मैं उसको लेके चलूं। पहले मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड सर, करना पड़ेगा। अगर आपको हर महीने 3 दिन के लिए किसी इंटरनेशनल सिंगापुर भेज दिया जाए और वहां पे आप 3 दिन में प्रैक्टिस करें, जरिए बता इंग्लिश ही बोलेंगे, तो क्या आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी? में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जी पे दूसरा ऑप्शन ही हमारे पास होगा। हाँ बिल्कुल। तो बेसिक, तो अगर आप घर में बैठे हुए हों और हम आपको वर्चुअल एक्सेस दे दें पूरी दुनिया की, जहाँ भी आप लोगों के साथ इंग्लिश में बात करें, तो आप टाइम निकाल सकते हैं बात करने का? टाइम बेसिकली मैं ये देख रहा था इसमें जैसे जो आइट्स के आपके सेशन है वो हैं
1 to 3 आई थिंक मैं सेशन आइल्स के सेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आपको वर्चुअली एक्सेस हो इंटरनेशनल लोगों की कि उनसे बात करें, तो आप बात करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। निकाल सकता हूँ। तो फिर क्यों नहीं निकालते? जो हमारी हैकाथॉन होती है वो क्या चीज होती है? वो यही चीज होती है ना, महीने में एक दफा जाएं उसमें वर्चुअली 3 दिन के लिए। हर महीने ये काम करें तो आप 6 महीने साल बाद आप बड़ा अच्छा बोलते होंगे। और उससे भी पहले आपको उर्दू में पढ़ाना आना चाहिए कि ये जो सेशन हो रही है हमारे, किसी सेशन में एज अ मॉडरेटर जाएं, वहां पे जाके पहले उर्दू में स्पीकिंग करना सीखें। क्योंकि जो 80% काम है ना वो है स्पीकिंग करना किसी भी लैंग्वेज में, इवन उर्दू में। अगर आपको आई उर्दू थिंक में मे बी बात करना आ यही गया जी जी तो इंग्लिश में आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि अब इसी में हमारे कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती रहेगी। बिल्कुल। और ये 4 कैरियर काउंसिल की जो टॉक है ये भी सुन ले एक दफा, ताकि आपने जिंदगी जिस तरह 5 साल जाया किए ना, तो और टाइम जाया ना हो। ऐसा ही है। शुक्रिया। वेलकम जी। एनी अदर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जीपीए जो है वो कितना मैटर करता है अगर हम मास्टर्स की स्कॉलरशिप को देख रहे हैं। सिर्फ जीपीए मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। मतलब अगर आपका एवरेज हो 3.3 के आसपास, 3.2 हो, तो फिर वो इज इट एन आइडियल जीपीए? हाँ, गुजारा हो जाएगा। वैसे जीपीए 3.5 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 3.2 3.3 पे भी हो जाता है। आज हमारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप हुआ है 3.3 पे। अभी इसी साल एक स्टूडेंट का स्कॉलरशिप हुआ 3.07 पे। तो लेकिन ये थोड़ा इसमें जोर ज्यादा लगाना पड़ता है फिर स्कॉलरशिप ढूंढने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। तो कोई और साथी, किसी और साथी का क्वेश्चन? ये चैट में क्वेश्चन आया कि 3.7 गुड एनफ है कि नहीं है, तो भाई ये ऊपर जो 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स है ना वो सुन लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वैसे तो जीपीए 4 भी किसी काम का नहीं होता, स्कॉलरशिप नहीं मिलता CGPA 4 पे। क्योंकि दुनिया में हजारों लोग हैं जिनका CGPA 4 आता है। तो उसके साथ जो बाकी चीजें आई कोड गुरु करवाता है वो करनी होती हैं। तो अगर आप रोजाना का 1 घंटा हमारे प्लेटफॉर्म पे गुजारते हैं तो आपका प्रोफाइल तैयार हो जाता है। एनीवन एल्स? किसी साथी को फीडबैक? अच्छा, आइल्स के लिए मेरी एक टॉक है जिसमें बताया गया कि आइल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वो टॉक्स प्लीज सुन लीजिएगा, तो इसमें पता चल जाएगा। उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि आइल्स से जीआरई का पर्पस क्या होता है, इन्हें तैयार कैसे करना चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स इसमें आए। तो वो जो है ना, तो वो सब साथी वो लाजमी सुन लें। अच्छा, चैट में क्वेश्चन है, कोई साथी रीड कर देगा? Sure, sir. यस सर, मैं रीड करता हूँ। जी करें। सर मैंने CS50 पजल डे में पार्टिसिपेशन किया है और एक यूके की पार्टिसिपेंट थी मेरे साथ। तो मैंने मोटिवेशन लेटर लिया है उससे, तो इसका क्या कोई बेनिफिट है? हुज़ैफा अली ने क्वेश्चन किया। जी हुजैफा, ये आप पहले ना 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, मेरा ख्याल है उसमें चीज काफी डिटेल में कवर की गई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट हाँ, फायदा फायदा हो जाता है। जी सर, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन अटकर है। जिस तरह आप यहाँ पे ज़्यादा आईटी और जॉब्स के रिलेटेड और स्कॉलरशिप के रिलेटेड सेशन करवा रहे, तो कोई हमारा यहाँ पे कोई मैनेजमेंट के हवाले से नहीं है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिस तरह आईटी से बिलोंग करते हैं तो
एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, फजूल रोल है और नॉर्मली अनपढ़ रोल है ये आपको किसी ने गलत गाइड किया। ठीक है, देखें अशफाक, एक बात ध्यान में रख ले, जिसको कोडिंग नहीं आती वो अनपढ़ है, वो किसी काम का बंदा नहीं है। अगर आपको कोडिंग आती है तो उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आपने मैनेजमेंट करनी है या डेवलपमेंट करनी है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपके लिए कोई जॉब नहीं है। इस सर मैं उसी वाले से बात कर रहा हूँ। मेरा तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया फील्ड का। आपने क्या काम किया इस एक्सपीरियंस में? 3 साल तो मुझे हो गए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सिस्टम्स है, ई सिस्टम्स, उस पर काम करते हुए। भाई आप दिन में कितने घंटे कोडिंग करते हैं? दिन में तकरीबन 5 से 6 घंटे। आप कोडिंग कर रहे होते हैं? जी। अच्छा, सही है। तो आपने लीड कोड किया हुआ है? लीड कोड तो नहीं किया मैंने। तो इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। मैं वही देख रहा था, लास्ट वीक से मैं सर्च आउट कर रहा था ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली क्योंकि मैंने भी बेसिक कैरियर नॉलेज। में 15 साल गुजारने के बाद लीड कोड स्टार्ट किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मुझे पता चला कि मुझे तो कोडिंग ही नहीं आती। तो इसलिए इट इज सुपर क्रूशियल। तो आज की दुनिया में आप मैनेजमेंट के हैं, आप एमबी के हैं, फाइनेंस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, अगर आपको कोडिंग नहीं आती ना तो देर इज नो ग्रेजुएट लेवल जॉब फॉर यू। तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि कोडिंग के बगैर गुजारा नहीं है। तो थैंक यू जी। सर आकब ने शेयर कर दी है मेरी टॉक, क्या एल्सो जीआरयू कैसे तैयार करना है, तो वो एक दफा देख लो, इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा काफी, क्योंकि हमें आइल्स में हाईएस्ट स्कोर चाहिए होता है। जी, किसी और साथी को कमेंट? तो अशफाक साहब, मैंने थोड़ी सख्त बात की है, मुझे आइडिया है उस बात का, नहीं नहीं लेकिन सर, भाई अच्छी बात है, सच आप अगर सच गाइड कर बोलना रहे हैं जरूरी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, लगता है बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स गो बैक एंड थैंक्स टू मॉडरेटर्स फॉर योर सेल्फलेस एफर्ट्स। यू गाइस आर मेकिंग हिस्ट्री। तो कंटिन्यू करें। Thank you so much, sir, for joining us and taking time at late night. And I hope so. Participant queries are resolved now. All right. If no one has question, let's move to our session. Sir, Noman Munir also join us. If anyone has question, you may ask from Sir Noman as well. Otherwise, we can continue our practice session. Okay. Who would like to answer the part one question first today? You can raise your hand. Anyone who would like to answer? Okay. Okay. Sir. Ma'am, I can. All right. Let's start our practice and let's talk about email. What kinds of emails do you receive about your work or studies? The email that I receive usually are about my university, uh, most of my about my university exams and the assignments that are given by my professors in my university, and mostly they are about some of the feedbacks and given tasks about next week or maybe this week. Do you prefer to email, phone, or text your friends? Uh, I prefer to text my friends because it's easy for me to text them, and sometimes I also call them by my phone.
Do you reply to emails and messages as soon as you receive them? No, usually I reply them when I am free, because most of the time I am not using my phone, and whenever I get free, so I reply them. Are you happy to receive emails that are advertising things? Uh, in my opinion, I think it's a good thing for them to advertisement by to do advertisement by emails, but I am not happy with that because whenever I got these emails, it is just an distraction for me, and it also uh, try to distract me from my work. Okay. Anyone who would like to give feedback for this part one for the person said? Anyone who would like to? Alright. So, things which I have noticed in the last part. Are you in the last question? Are you liking ideas? Sorry, ma'am, I could not listen you properly. I am saying in the last question, which is fourth one. Are you liking ideas in that question? Yes, ma'am. Alright. And that's the reason when you started to produce filler words, because there were many, much than compared to the rest of the thing. And I think these are caused by when you are liking ideas, because you're sometimes we stress and we don't have to say anything. So I think that's the reason. Try to make yourself familiarize, or try to make yourself comfortable to speak on any topics such as which are unfamiliar to you. Like sometimes the topics which are not familiar with us, we try to make more mistake because we're lacking ideas or things for speaking. This is the one thing, because these one there was not much when you were in the part one question. So this is the one thing. Another thing, you can speak one or more sentence for each questions. And one thing you are making through advertising something, like you need to restructure their sentence as well. And sometimes some words are not clear for me. I don't know this is the case for the rest of the participant, but try to slow your speech so that you can a little bit slow your speech so that you can get some time to so that you can get some time to gather your thoughts. So these are the some feedback from my side. If anyone has, he or she welcome to add. Yeah, ma'am. I would like to answer these questions. Can you please ask me? All right, and thank you, Sir Farooq, for answering this question. We will Thank you, ma'am, for the feedback. welcome, sir. Let's conduct part one questions. So let's move to the part two. Ma'am, Javia, would you like to answer the part two question? Mm, okay, ma'am. All right, I'm starting a 1 minute timer. Your part two question is describe a hotel that you know. You should say where this hotel is, what this hotel looks like, what facilities this hotel has, and explain whether you think this is a nice hotel to stay in. So this is a question. I'm going to start a 1 minute repetition time. Okay, ma'am. You can make notes as if you want. Mm,
You can start now. I would like to talk about a hotel in my city. It is located 2 kilometers away from my home. Uh, this hotel mm, is built in a grassy area. The environment is too pleasant, uh, and whenever I visit this hotel, I feel very refreshed. Uh, building is consists of 2 stories, uh, and the environment is too uh, good, and the chairs and tables are set beautifully. And additionally, there is also a separate portion for females. So this is because females feel very comfortable there, and the working staff also very uh, very good. And whenever someone go there, and every time uh, every time they manage their task on time, and we find no difficulty there. And there are many foods, different flavors always are available. We can order on any time. Also, there is also a online delivery facilities is also available. So I feel very happy about Speaking. So you speak around 2 minutes and 10 seconds. Overall, time is 1 to 2 minutes. So you don't need to worry when I stop you, because even examiner will stop you. So anyone who would like to add feedback first? Ma'am, I think ma'am was speaking very slowly, and I think ma'am was also generating some ideas while speaking. Uh, so this is the thing that I noticed from my side. But one good thing that I noticed is that ma'am was using some connector words. That is good. In which verse? Connector words like additionally, whatever. I think connect or linking verse or connectives, right? Yes, ma'am. Anyone else who would like to add? Okay, one thing I have noticed that have you made notes, like have you answered all these questions when I given you a 1 minute preparation time? Yeah, actually, I made 5 points about this. Have you answered all these questions? Actually, I made points not exactly related to these questions, but according to my knowledge. I think you make notes based on the first line, right? Yeah. So there, why I asked from you, because when I uh, was listening to you, I have noticed that uh, it is not necessary you should say, but they didn't say you must say. So it is not necessary if you talk about all these one. It is okay if you talk about one or two, and if it is okay if you're not talking about one of these one. But one thing I've noticed, I didn't find these things like how the hotels looks like, what are the facilities. So it seemed that this shows that that's the reason you are talking about other things. Okay, it is not okay. This is a topic you can talk about relevant things, but one thing is that even if you know nothing, if you know nothing, try to write one word answer of this, where this hotel is. Like you can say that this city near these areas, like the facilities where are available, like
in that area this hotel is existing, like it is on the top of the hills, whatever the location is. Try to write one or two words, don't write sentences. Then what this hotel looks like, you didn't talk about these two things, so that's why if you will try to answer each question in 1 minute preparation time quickly, means you are just writing one word, it will help you now to organize your story logically or structure your story, but also it will help you to collect your thoughts, because these questions help you, like what's this whole hotel looks like oh, you can talk about its appearance, its design. These are the many things which you can talk about. And then what facilities this hotel has, you can say that there are many cuisines are available there. You can say that both have international national foods. You can say different countries such as Italian, Chinese. So these questions, if you go through, these are the many things which help you to gather your thoughts in 1 minute preparation time. And if you can say whatever you food you want to make, if you order, then they can give you quickly. So this is the one thing, it is good. So why you think this is a nice hotel to stay in? So these are the other things you can talk about due to the food, accommodation, or many things. So one thing I have noticed, so I think that's the reason you were talking about rather than these things and some basic things. So if you try to answer these questions, it helps to keep going while talking about this part. So try to answer all these questions. It is okay if you're not talking about one or two in your speaking. So I think it is okay. So another thing I would like to say, your sentence was a little bit very simple, and but okay, before coming to this point, I would like to add main point, like you were lacking accuracy. You are sometimes missing subject verb. Stop also very good. So stop is also very good. So you are missing verbs between sentences. So you have the problem of accuracy in your sentences, and try to, when you are able to speak, then your next focus should be try to speak complex sentence. So your sentence was very simple, like hotel is very beautiful. So because this thing can also talk about even children, so try to bring something complex. Whenever I go there, I first analyze it look was very beautiful. So these are the also simple sentence, but if you join them some conjunctive words, you will be able to uh, explain and extend your story